hope you all had a good weekend and getting ready for the next week market action. Next week market is going to be full of action. Budget is there. On 23rd, the budget will be presented, and normally during the budget there is a lot of volatility. A market can have a big rally or big fall. I mean, it all depends on what is presented in the budget, right? So a lot of things going on in the market. US Fed rate reduction is also expected next month. So that is also playing out. So it's important to analyze the levels for Nifty, Bank Nifty, and some important stocks, right? So let's look at that. Let's get going. For those of you who don't know me, my name is Ritin Chaudhary. I run this firm RGS Consulting for last 8 years now. And before that, I used to work in the IT industry for almost 15 years. And over the period of last 8 years, we have developed a lot of competency in the equity field, in the wealth management field, and we offer various services in the stock market area, private equity space, some services in cryptocurrencies also there. So just quick background about myself. So let's discuss what the bulls and bears are doing in the equity market. Whether the bulls are going to dominate over the next coming weeks or whether the bear is going to dominate over the next few weeks. Let us take a look. So as we always do to study the market, we have to look at the levels for important indices. We'll study Nifty, Bank Nifty, we'll analyze Nifty, Bank Nifty. We'll also look at the global markets, SPX, NASDAQ, dollar index, DXY, bond yield, what is happening in crude oil, what is happening in gold. And then we'll also look at some momentum stocks. We'll look at some stocks in defense, railway, power sector, and also we'll look at IT. IT has given a good breakout last week for various reasons. We'll discuss about that. And then, of course, I'll take some question and answers. I can analyze some of the stocks which you people want. You can share your stock requirements or stocks you want me to analyze in the chat box also. We'll look at it. So let's go to Nifty. Let's go to the charts. This is the Nifty chart for all of us. So let us look at a shorter time frame. Okay. So this is a 1 hour time frame that we are looking at. So if we look at the charts and the patterns that are developing on the shorter time frame, that is 1 hour time frame, Nifty had a strong support at 24,500, and as I had mentioned in the RGS Alpha group also, 24,500 support maintained for last week. Okay, and the close has been about 24,500. But I will say the fall is not over. Still some fall is possible or expected. Now, if we look at the previous few weeks, Nifty touched this pink line on 10th of July, went below it, and then after that, I think there was a continuation of the rally. So something similar is expected this time also, unless there is some very surprising thing in the budget, unless there is something very surprising in the budget, something very negative in the budget. Otherwise, mostly Nifty might go a little bit lower, maybe towards 24,400. And from there, we should see a rally continuation. But then having said that, it's not that the rally is going to continue all the time eternally. ऐसा नहीं कि market ऊपर ही ऊपर जाते रहेगा. I guess we are reaching the top of the market, and यहाँ से अगर pullback मिलता है towards 24,900 or 25,000, it will be, you can say, a local top for maybe another 2-3 months. I don't think Nifty will go beyond 25,000 in the short term, and there is a possibility that it will drop towards 24,000
or even towards, I mean, 24,000 is next immediate support. And if we look at slightly higher time frame, it can go all the way up to 23,000 also. So 23,000 cannot be ruled out. So if you ask me for the next 2-3 months, the range will be 23,000 to 25,000. So this 2,000 points range will play out in next 1 to 2 months, unless there is some very different thing in the market, some different development in the market geopolitically or economically. Okay. Even if we look at on the longer time frame, so this is a 3-day time frame, and if you can see here, this is an inverted hammer which has got formed. Okay, now inverted hammer, if you know, is a bearish pattern. जब inverted hammer form होता है तो उसके बाद में normally market ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है या fall होता है. Correction is due normally when this type of pattern is formed. Okay, so from this analysis point of view, I derived certain levels. I will share that with you. Then we look at Bank Nifty. अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट जो है वो मोर और लेस सिमिलर है. So on the shorter time frame, okay, Bank Nifty support is around 52,000. तो ये 52,000 का सपोर्ट अगर ये होल्ड नहीं करता है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट इट विल मूव टुवर्ड्स 51,700 व्हिच इज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल. ओके, एंड ऑन द अपसाइड the next resistance is around 52,800 and the resistance after that is close to 53,600, or let's say, yeah, 53,650 types resistance will be there. So these are the levels for Nifty and Bank Nifty. If we look at Bank Nifty on the higher time frame, let's look at Bank Nifty on 3 days time frame. Let's look at the moving averages. So again, Bank Nifty has also formed a similar pattern like Nifty. This is also an inverted hammer. On Nifty, we saw there is an inverted hammer. Similarly, on Bank Nifty also there is an inverted hammer. They are almost closely following each other. ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं कि भाई निफ्टी बेरिश है या बैंक निफ्टी बुलिश है. दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी इज स्लाइटली मोर बुलिश कंपेयर्ड टू निफ्टी. If we look at some other parameters, okay, if you look at RSI here, RSI has topped out. Okay, for Nifty, RSI has topped out. So that's the reason I am saying अभी इसके बाद में बहुत ज्यादा अपसाइड इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है. मे बी एक साल के बाद में निफ्टी 26,000 27,000 जाएगा. बट करेंटली 25,000, अगले 2-3 महीने में 25,000 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है. टुवर्ड्स 23,000 डीप जाने के चांसेस ज्यादा है. सो व्हाट इट मीन्स इज दैट आइडियली आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. अगर 23,000 की तरफ जाता है तो आपके पास में फंड्स रहने चाहिए फॉर बाइंग एट दैट लेवल. So RSI is also indicating that Nifty has topped out. We'll look at some other parameters also. So we'll have looked at the charts of Nifty and Bank Nifty. थोड़ा ग्लोबल चार्ट्स के ऊपर भी देखते हैं. Let's see what is happening in SPX. So on 1 hour SPX has given a correction already. Let us look at our 3 days time frame. Okay. तो अगर हम निफ्टी को कंपेयर करते हैं 3 डेज के टाइम फ्रेम के ऊपर विद एसपीएक्स. एसपीएक्स बाय द वे इज स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, द लिस्ट ऑफ द इंडाइस ऑफ top 500 companies in US. Okay, तो दिस इंडिकेट्स द ग्लोबल स्टॉक मार्केट मूवमेंट. तो यहाँ पे काफी बेरिश मूवमेंट है. स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है ऑन 3 डे टाइम फ्रेम ऑन एसपीएक्स. कंपैरेटिवली निफ्टी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा बोल सकते हैं. निफ्टी फॉर द लास्ट 3 days इज डाउन स्लाइटली. It is down 0.33%, whereas SPX is down 2.86%. तो ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में निफ्टी में काफी कम फॉल हुआ है.
बट अगर एक ग्लोबल मार्केट का फॉल ऐसे ही चालू रहता है तो इसका इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर भी आएगा। अभी निफ्टी कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अभी ये ग्लोबल मार्केट में फॉल क्यों हो रहा है? द रीजन इज द एक्सपेक्टेशन दैट देयर विल बी फेड रेट रिडक्शन। ओके, नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर रेट रिडक्शन होगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा। बट होता यह है कि इन द एंटिसिपेशन दैट फेड रेट विल बी रिड्यूस, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड, मार्केट ऑलरेडी टॉप आउट हो जाता है, वो न्यूज फैक्टर हो जाता है। और जब एक्चुअली वो इवेंट पास में जब आता है, अभी कंफर्म है कि भाई रेट रिडक्शन होगा, बिकॉज ऑफ दैट इसमें ऑलरेडी फॉल चालू हो गया है। सो देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट S&P 500 SPX विल मूव टुवर्ड्स द सपोर्ट लेवल ऑफ 5370। सो अनदर 3% 4% फॉल इन SPX इज पॉसिबल। और अगर ये होता है तो इंडियन मार्केट भी प्रेशर में रहेगा। सो दैट इज रीजन आई सेड निफ्टी कैन फॉल टुवर्ड्स 24,000, जो अभी 24,500 का जो लेवल चल रहा है। सो 24,000 की तरफ निफ्टी गिर सकता है बिकॉज ऑफ ऑल द करंट डायनेमिक्स। बजट में क्या आता है उसके वजह से तो अलग डायनेमिक्स होगा ही। सो दैट विल हैव टू सी, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट वी सी इन द बजट ऑन ट्यूसडे। 23rd को बजट एक्सपेक्टेड है, 23rd जुलाई को। आई एम नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज ड्यू ऑन 23rd, राइट? So that is SPX. SPX is showing a negative trend. गोल्ड में देखते हैं क्या हो रहा है। नॉर्मली इन द रेगुलर सिनेरियो गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट गो हैंड इन हैंड। तो SPX में भी फॉल हमको दिख रहा है, गोल्ड में भी हमको फॉल दिख रहा है। लेट अस लुक एट डॉलर इंडेक्स। ये थोड़ा स्ट्रेंज है। नॉर्मली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है तो डॉलर गिरना चाहिए, बट डॉलर हैज गिवन पेंटेड अ bullish candle, so that is slightly surprising. Maybe the reason is money might move from stock market to dollar. Although dollar in the literal terms or in the actual terms might reduce, the value of dollar might reduce, but compared to the stocks, the value of dollar may not reduce so much. So market or the large players are expecting a big fall in stock market, at least in US, and because of that, the money is moving to dollars. China market is also under pressure. There is a lot of correction or a lot of fall in China market already. China is one of the biggest market, right? So ये जो माइक्रो फैक्टर्स है, these are indicating that the markets are all are under pressure. Let us look at crude oil. क्रूड ऑयल भी गिर रहा है। ओके, अभी क्रूड ऑयल जब गिरता है तो उसका इंडिकेशन सीधा सीधा ये होता है कि इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी बेरिश। इकोनॉमी अगर डाउन जा रहा है तो ऑयल का डिमांड कम होता है। अगर ऑयल का डिमांड कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका अगर ऑयल का डिमांड कम हो रहा है तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द चार्ट्स। ऑयल का डिमांड कब होता है? जब इकोनॉमी स्लो हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रहा है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो रहा है, सो लोगों का स्पेंडिंग कम हो रहा है। सो इन दोस टाइप ऑफ सिनेरियोज ऑयल गोज डाउन। तो सब फैक्टर्स दिखा रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट तो प्रेशर में है और फॉल एक्सपेक्टेड है ग्लोबल मार्केट में इन नेक्स्ट वीक और टू। Somebody asked about gold. I guess we already spoke about gold, right? So I mentioned about gold. Gold is also going down because money is moving to dollar. डॉलर ऊपर जा रहा है, गोल्ड इज गोइंग डाउन। तो ऐसे कंटिन्यू अगर रहता है तो गोल्ड में भी करेक्शन दिख सकता है। ऑल्दो बड़ा करेक्शन नहीं आएगा गोल्ड में, बट देर मे बी अनदर 3% 5% करेक्शन इज पॉसिबल इन गोल्ड ऑल्सो। सो net if we look at the levels, ओके, तो निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म लेवल है इट इज 24,450 टू 24,900, और उसको आप स्ट्रेच करके 25,000 पकड़ सकते हो। ऑन द हायर टाइम फ्रेम द रेंज इज 24,100 टू 24,900। एंड ओवरऑल अगर हम रेंज देखते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट 24,000 टू ब्रेक, बट 24,000 टेस्ट होना चाहिए। 24,000 टू 24,900, दिस इज द रेंज वी शुड लुक फॉर जुलाई मंथ or maybe till first week of August. Unless and until, as I said, there is some major change in the market dynamics, ये levels फॉलो होने चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो वी स्पोक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेवल है 51,100 टू 52,800,
That is the shorter time frame level. Currently, it is 52 300 roughly. Okay. On the higher time frame, you are looking at 51,000 to 53 600. And on the overall अगर हम range देखते हैं from the long term point of view, Bank Nifty should trade in the range of 51,000 to 53 600. तो ये बड़ा रेंज है बट ये मोस्टली प्ले आउट होगा. यू माइट हैव सीन इन माय अर्लियर मैसेजेस एंड इन माय अर्लियर ट्वीट्स एक्सेट्रा. जो हायर टाइम फ्रेम का रेंज होता है वो मोस्टली फॉलो हो जाता है और नेक्स्ट 1 or 2 weeks. Okay, any question here or we can move forward? Okay, let's move on. So what has happened in the last week, or what are the major developments in the last week or so? So Reliance results came over the weekend. The Reliance results are slightly weak. So again, that will put pressure on the Nifty. IT results have been very good. Infosys, HCL, TCS, all the IT results have been good. So overall, IT is expected to do good in the next 6 months to 1 year time. मनी रोटेशन जो होता है मार्केट में, मनी माइट फ्लो और मनी विल फ्लो फ्रॉम some of the other stocks like maybe power or energy or railway or banking stocks to IT. IT काफी डाउन था फॉर लास्ट 2-3 years और अभी IT का रैली चालू हो रहा है. We can take a quick look at the IT chart, Nifty IT. So if you look at here, Nifty IT has given a breakout. Okay, this close above this Nifty IT index. Nifty IT index closed above 39,500 or 39,425 was the resistance area, and the close for last week is 39,900, 39,923. So Nifty IT has given a breakout. Okay, so this sector will lead for sure. Good money is to be made in the Nifty IT stocks. So just make a note of it. It's quite an important breakout. जो 2022 का जो उसका लास्ट रैली था, उसके बाद में फॉर 2 years इट वाज डाउन. फॉर मोर देन 2.5 years you can say it was down. So Nifty IT or the IT stocks will definitely do very good over the next 6 months. तो अगर पैसा बनाना है तो निफ्टी आईटी में अच्छा पैसा बनेगा इन द नेक्स्ट few quarters. Okay. Then Fed rate reduction, we already discussed that. One of the reasons why IT is doing good. Okay, फिर से अगर आप चार्ट पे जाते हो तो दिस इज द टाइम जनवरी 2022 यहाँ से फेड का रेट इंक्रीज चालू हुआ, रेट हाइक चालू हुआ. तो जब से रेट हाइक चालू हुआ उसके बाद में आईटी डाउन गया, क्योंकि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो इट इज नॉर्मली निगेटिव फॉर द इंडियन आईटी कंपनीज. और अभी डॉलर का रेट कम होने के चांसेस है, रेट रिडक्शन होने के चांसेस है. सो दैट इज पॉजिटिव फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ आईटी कंपनीज इन इंडिया. जो इंडिया की जो आईटी कंपनीज है मोस्टली इनके लिए अगर डॉलर का रेट कम होता है, सो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर देम. And from that point of view, it is reflecting on the charts also. So clearly we can see on the charts, the market is factoring that there will be a rate reduction, and that rate reduction is playing out in the different indices. Some indices are going down, some indices are going up. So if you want to pick up the stocks for some good profit, IT index में अच्छा profit निकलेगा, IT stocks में अच्छा profit निकलेगा. Let's move. Let us do some data analysis. We'll look at futures built up. So we'll do some analysis for P ratio, price to equity ratio for Nifty. We'll look at PCR, put to call ratio, FI, DI activity, what is going on. It will again give us some clarity about the market direction. So this is the FI, DI activity. If you look at the monthly activity, FI, DI, net, July, so far net has been positive. So from February onwards, there has been net investments in the market. People have not taken out money. So obviously we saw that on the charts also. बट अभी थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, एफआईआईज ने क्या किया है और डीआई ने क्या किया है. ओके,
सो एफआई स्टार्टेड बाइंग इन जून, उन्होंने जुलाई में काफी बाइंग किया. नाउ दिस डिफरेंस और दिस कंपैरिजन इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड लुक एट डीआई व्हाट दे आर डूइंग. डीआई ने जुलाई में बहुत छोटा बाइंग किया है. ओके, और आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ डीआई एंड्स अप बीइंग नेगेटिव बाय द एंड ऑफ जुलाई. ओके, और अगर हम एफआई देखते हैं तो एफआई ने जुलाई में बहुत हेवी बाइंग किया है, डीआई ने जुलाई में निग्लिजिबल बाइंग किया है. ओके, तो शायद डीआई को लग रहा है, डीआई ने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है, अभी ज्यादा पैसा मत लगाओ. एंड नॉर्मली वी विल सी द मार्केट ट्रेंड वेन एवर द एफआई डू हेवी बाइंग, उसके बाद में मार्केट गिरता है. एंड वेन एवर द डीआई स्टार्ट सेलिंग और वेन एवर द डीआई स्टॉप बाइंग, तो इंडिकेट होता है कि अभी मार्केट गिरने वाला है. तो एफ आई आर ऑलवेज लेट टू बाय एंड एफ आई आर ऑलवेज लेट टू सेल. तो ये एफ आई आई और डी आई आई का जो ट्रेंड दिख रहा है बाइंग सेलिंग का, इन्वेस्टमेंट का, सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट द मार्केट विल बी अंडर प्रेशर, मार्केट विल बी बेरिश इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स. ओके, अगर हम पुट टू कॉल रेशियो देखते हैं, पीसीआर इज ऑल्सो इंडिकेटिंग समथिंग सिमिलर. पीसीआर में नॉर्मली ये होता है कि जब भी आपका पीसीआर 1.5 के आसपास जाता है, वहां से निफ्टी नीचे जाता है. ओके, एंड दैट हैज हैपेंड दिस टाइम आल्सो. ये 4 जुलाई को इसने, सॉरी 10 जुलाई को इसने 1.5 टच कर दिया था. तो एक बार ये 1.5 के आसपास जाता है, 1.45 के ऊपर जाता है, तो वहां पे आपको पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए. एंड यू कैन इवन गो एंड शॉर्ट द मार्केट. कुछ 100% तो कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, बट ये आपको 90% क्लैरिटी दे रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस होते हैं. एज वी सॉ ऑन द चार्ट्स, मार्केट हैज गॉन डाउन आल्सो. तो प्रेशर इज आल्सो इंडिकेटिंग लिटिल बिट ऑफ प्रेशर. फ्यूचर्स बिल्डअप अगर देखते हैं, सो बाइंग निफ्टी is slightly bearish compared to Nifty as far as the build-up is concerned, open interest is concerned. दोनों में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहे हैं. लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि लोग लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही है. अभी तक शॉर्ट पोजीशंस लोगों ने क्रिएट नहीं की है. स्टिल द पोजीशन, मार्केट इज इन द न्यूट्रल मोड. ओके, शॉर्ट पोजीशन ऐसे अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, बट एट द सेम टाइम फ्रेश लॉन्ग ऐड नहीं हो रहे. सो दैट शोज दैट पीपल आर नाउ लिटिल कॉशियस. Okay, obviously in the medium term means 1 to 3 months. Nifty is currently still having a long build-up, and this is another very interesting ratio or parameter that you should look at, especially if you are tracking the market from long-term point of view. This is the Nifty P ratio. Okay, Nifty का प्राइस और Nifty P ratio, उसका क्या कोरिलेशन होता है ना, वो आप यहाँ पे देखो. So this is the chart for last 5 years. So ये पिंक लाइन जो है, इट इज निफ्टी पी. ओके, एंड द ब्लैक लाइन इज द निफ्टी वैल्यू. तो पास्ट में अगर हम देखते हैं, जब भी निफ्टी पी आपका 25 के ऊपर जाता है, उसके बाद में निफ्टी में करेक्शन होता है. ओके, सो करंटली निफ्टी पी इज 24. तो ये दिखा रहा है कि और थोड़ा अपसाइड पॉसिबल है. सो आई सेड 25,000 तक निफ्टी जा सकता है, और वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कैश निकालना चाहिए मार्केट में से. सो ऑल सेड एंड डन, थोड़ा अपसाइड बाकी है, बट ओवरऑल अभी टॉप फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, सो यू लुक्ड एट द डिफरेंट पैरामीटर्स. वी हैव सीन द एफआईआई, डीआई, बाइंग सेलिंग डेटा, पीसीआर हमने देखा, फ्यूचर्स बिल्डअप हमने देखा, द निफ्टी पी रेशियो ट्रेंड वी हैव सीन. ओके, सो दिस इज इनफ information and data to give you some proper direction. Any question here? सो देयर इज अ क्वेश्चन, इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा होना चाहिए? देखिए, नो सिंगल पैरामीटर विल गिव यू एन एग्जैक्ट आंसर. आपको 3-4 अलग अलग चीजें कंपेयर करना ही पड़ेगा, ट्रैक करना ही पड़ेगा टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन. So as I said, IT stocks will definitely give you good money in the coming weeks. We saw the IT index chart. IT index ने breakout दे दिया है, तो जो भी IT stocks है, like TCS, Infosys, HCL, Tech Mahindra, Coforge, KPIT, all these stocks are going to give good money. Okay, and Defense Railway
स्टॉक्स अभी इनमें काफी करेक्शन आया है, तो थोड़ा बहुत और करेक्शन होता है तो यू कैन लुक एट बाइंग दिस स्टॉक्स ऑल्सो. Okay, before we move, I wanted to share some of the trades in our PMS activity. We do PMS and account handling for clients on profit sharing basis, right? So just wanted to share some recent trades that we have taken. So you can see here Adani Enterprises, we bought at around 3000 and we sold at 3600. अभी आप देख सकते हो कि करंट रेट अराउंड 3077 चल रहा है. तो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट और प्रॉपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. एबीबी स्टॉक भी हमने, इफ यू कैन लुक एट हियर, वी बॉट अराउंड 6400. कुछ क्वांटिटी 8000 पे सेल किया, कुछ क्वांटिटी 9000 पे सेल किया. अभी 8400 रेट चल रहा है एंड विल बाय मे बी टुवर्ड्स अराउंड 8000 और 6500. तो ये सब प्रॉपर चर्निंग अगर आप करते हो आफ्टर कंसिडरिंग द प्रॉपर प्राइस एक्शन एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स, you can make good swing trades. Some more trades I can show you here. Linde, we bought around 6800, बाद में हमने प्रॉफिट बुकिंग किया 7800 पे, 9700 पे. अभी आप देख सकते हो प्राइस चल रहा है 8100. सो ह्यूज स्विंग्स. Inox Wind, we bought at around 146, sold in different stages. 171 पे लास्ट सेलिंग था, अभी 153 चल रहा है. हो सकता है अभी करेक्शन में मार्केट ये स्टॉक 150 या 120 की तरफ भी जाए, तो वी कैन बाई इट अगेन. IRFC 5 जुलाई को 188 पे बाय किया था एंड ऑन 11 जुलाई वी सोल्ड इट अराउंड 207. ओके, सो इन अ वीक्स टाइम अ गुड 15% प्रॉफिट. So this type of trades you can look at doing yourself also. Idea, a very beautiful stock for swing trading. 13.5 का बाइंग है, 16 पे बेचा, 18 पे बेचा. Again now it is below 16.5, we can buy it again 16 below 16.5. Bharat Forge we entered around 2001, प्रॉफिट बुकिंग किया 232 पे, 318 पे, अभी 305 चल रहा है. आई एम श्योर इट विल कम टू अस 270 240, विल बाय इट अगेन. ओके, so you can note down some of the stocks in defense. These are some of the good stocks in defense. Thaneja, भारत डायनामिक्स, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि स्टॉक्स है, बट टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड does lot of defense works and they have got huge defense orders also. Of course, there are other stocks like Masgao Dock, Hindustan Aeronautics, Garden Shipbuilding, etc. Those are also good stocks, but इन stocks में momentum ज़्यादा है. Then the railway stocks, you can look at stocks like Bharat Electronics, BEML, RVNL is favorite of everybody. Texmaco, Titagarh Rail. I would also like to add here Jupiter Wagons. Jupiter Wagons में अभी काफी correction हुआ है, तो you can look at going for Jupiter Wagon also. Power green energy stocks, Tata Power, Tata Power Finance Corporation, Inox Wind, KP Energy, Borosil Renewables, this is solar panel manufacturing company, NTPC, Amara Raja Battery, Zodiac Energy, again, all stocks with good momentum in the power and green energy. Of course, there are some more stocks in the power and green energy field, but we have identified the stocks with the best possible momentum here. So one thing that I always tell and you should always follow, whenever you are doing the portfolio management, आपको हमेशा 1:2 रेशियो में बाय करना चाहिए. ऑलवेज लुक एट बाइंग एट डिफरेंट लेवल्स. डोंट पुट ऑल योर मनी एट वन पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि कोई भी स्टॉक आप बाय करते हो तो उसके बाद में वो नीचे भी जा सकता है. तो आपकी लेवल्स आइडेंटिफाई करो एंड बाय इन द 1:2 रेशो. 1:2 रेशो मतलब होता है कि अगर आपका बाय वन प्राइस लेट से 3000 है और तो 3000 पे आप 2 यूनिट्स बाय करो एंड लेट से आपका बाय टू प्राइस 2500 है, तो यू कैन बाय, यू शुड बाय 4 स्टॉक्स एट 2500. तो क्या हो जाता है उसमें आपका ओवरऑल एवरेज बाइंग प्राइस बहुत कम हो जाता है एंड देन यू आर एबल टू मेक प्रॉफिट बुकिंग क्वाइट फास्ट. तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है. पोजिशन साइजिंग ऑलवेज डाइवर्सिफाई. डोंट पुट टू मच मनी इन वन सिंगल स्टॉक. 5% to 15% और 10 to 15% यू शुड पुट इन एनी वन पर्टिकुलर स्टॉक. प्रॉफिट बुकिंग कीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया पास में. We have done profit booking. We always follow this, and this always helps us during a downfall. As I showed you here, 6,800 पे buy किया, 7,800, 9,700 पे sell किया.
149, 165, 171. So different stages you sell. You need not sell at one stage, but at different stages पे आप as per your target levels, as per your technical analysis, you should do the selling. स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए. बहुत लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते. स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो मेजर इश्यू हो जाता है. ओके, बिकॉज इफ यू फॉलो स्टॉप लॉस, योर मनी विल बी प्रोटेक्टेड. वही स्टॉक आप और नीचे के लेवल पे बाय कर सकते हो. So 10 to 15% maximum you should allocate for one single trade. So these are some of the important guidelines for portfolio management. Please follow them. If you are following them, most of the times you will be able to make profit, and you can avoid loss also. So one idea I want to share here from the PMS point of view or account handling point of view. Would anybody like to make a corpus of 20 crores in 20 years, right? So I'm sure everybody would love to do that. And how to do that, I'll just quickly show you. So you can make a corpus of 20 crores in just 20 years in a very simple manner with minimum risk. This is a offering called as Trend 2020. यानी आप 10 lakh rupees लगाओ for 20 years. If you are putting 10 lakh rupees for 20 years, your 10 lakh rupees will become 20 crores in a matter of 20 years. How that happens? It's the power of compounding. If your portfolio grows just by 16% every year, बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव टारगेट रखने की जरूरत नहीं है. अगर सिंपल 16% एवरी ईयर भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है विथ मिनिमम रिस्क, आपका कॉर्पस 20 करोड़ बन जाता है आफ्टर 20 ईयर्स. सो यू कैन लुक एट डूइंग इट योर सेल्फ. अगर आपको प्रॉपर डिसिप्लिन प्रोफेशनल मैनर में आपका पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है तो आरजीएस कंसल्टिंग इज ऑफरिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. यू कैन गो फॉर अवर सर्विसेज. So these are various services that RGS is offering. We have PMS, as I said, account handling service, wherein we handle the accounts on the profit sharing basis. Then we also have consulting services for India market, as well as for US market. Very good results are available in the consulting service also, or advisory service also. And then we also have fund management services, wherein we offer assured quarterly returns or assured annual returns. So these are the various services. You can make a note of it. If you want more details, you can connect with me directly. We can discuss in detail. So RGS Alpha Group, many of you know, RGS Alpha Group is our free WhatsApp group wherein we keep on where we keep on giving market updates. यहाँ पे हम लोग market updates देते हैं, regular trades देते हैं. Very good information is shared. अगर यहाँ के आप trades से follow करते हो तब भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो. People are taking benefit of this group, and if you are not already part of the group, you are welcome to join. You can ask your friends and contacts to join this group. So any last questions? I would like to take some questions, or we can wrap it up here. So there is a question about persistent systems. Sir, IT sector is doing good, but persistent is down. Any particular reason? persistent का रिजल्ट खराब आया है. देखिए, कोई भी सेक्टर अच्छा करे इसका मतलब नहीं कि वो सेक्टर के सब स्टॉक अच्छे करेंगे. अल्टीमेटली आपको रिजल्ट, अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स. सो देयर रिजल्ट हैज बीन बैड एंड नॉट बैड बट नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन. सो मे बी और थोड़ा बहुत उसमें डाउनफॉल पॉसिबल है. लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हो. But overall, currently, it's not very advisable to look at persistent. But you can look at, as I said, stocks like TCS, Infosys, KPIT is very good stock. Zensar is good stock. So some of these stocks can give you good money in the short term. So should we buy at the current levels? Another question. देखिए, as I mentioned, Nifty can go up to 24,000. There is a high possibility that Nifty will test 24,000. 24,000 पे आप buying कर सकते हो, especially from the long term point of view. बट करंट लेवल पे बाय करने की जरूरत नहीं है. 24,500 अभी जो लेवल चल रहा है, मैं बोलूंगा आप प्रॉफिट बुकिंग करो. 24,800, 25,000 अगर निफ्टी जाता है तो यू शुड लुक एट डूइंग प्रॉफिट बुकिंग देयर, और ऑलवेज यू विल गेट अ चांस टू बाय अराउंड 24,000, 23,500. सो दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. So thanks again for joining, people.